रखी थार के रंगदार के, यही से लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के थानेदार के, करीले धंधा बालू के व्यापार के। कमर में पिस्टल और दुनाली, आला से बारी ते यही से भाव खाली। हाँ तोरा शौक बता, पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार। हम ही बचाइम तोरा हर जगह, करी सप्लाई इलीगल हथियार के। रखी थार के रंगदार के, इहे से लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल और तू नाली, आरा से बारिश तू यही से भाव खाली। मार देना गोलिया हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के। देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के। देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। तू का जनबू कारोबार के, जाली नंबर प्लेट लागल कार के। सब यार के और प्यार के, अब भेंट होई तो से एतवार के। हाँ तोरा शौक बका, पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार। कही थानेदार केस नहीं लिखूंगा, करी सप्लाई इलीगल हथियार के। रखी थार के रंगदार के, यही से कहे लोग शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल और दुनाली, आरा से बाड़ी तू यही से भाव खाली। रखी थार के रंगदार के, यही से लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के थानेदार के, करीले धंधा बालू के व्यापार के। कमर में पिस्टल और दुनाली, आला से बारी ते यही से भाव खाली। हाँ तोरा शौक बता, पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार। हम ही बचाइम तोरा हर जगह, करी सप्लाई इलीगल हथियार के। रखी थार के रंगदार के, इहे से लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे 147। रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल और तू नाली, आरा से बारिश तू यही से भाव खाली। मार देना गोलिया हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के। देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के। देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। तू का जनबू कारोबार के, जाली नंबर प्लेट लागल कार के। सब यार के और प्यार के, अब भेंट होई तो से एतवार के। हाँ तोरा शौक बका, पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार। कही थानेदार केस नहीं लिखूंगा,
करी सप्लाई इनलीगल हथियार के रखी थार के रंगदार के यही से कहे लोग शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल और दुनाली आरा से बाड़ी तू यही से भाव खाली रखी थार के रंगदार के यही से लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के थानेदार के करीले धंधा बालू के व्यापार के कमर में पिस्टल और दुनाली आला से बारी ते यही से भाव खाली हाँ तोरा शौक बता पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार हम ही बचाइम तोरा हर जगह करी सप्लाई इनलीगल हथियार के रखी थार के रंगदार के इहे से लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल और तू नाली आरा से बारिश तू यही से भाव खाली मार देना गोलिया हो हम जान के तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के दारू बंद तबो पी हम हर शाम के ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के दारू बंद तबो पी हम हर शाम के तू का जानबू कारोबार के जाली नंबर पर लेट लागल कार के सब यार के और प्यार के अब भेंट होई तो से एतवार के हाँ तोरा शौक बका पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार कही थानेदार केस नहीं लिखूंगा करी सप्लाई इनलीगल हथियार के रखी थार के रंगदार के यही से कहे लोग शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल और दुनाली आरा से बाड़ी तू यही से भाव खाली रखी थार के रंगदार के यही से लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के थानेदार के करीले धंधा बालू के व्यापार के कमर में पिस्टल और दुनाली आला से बारी ते यही से भाव खाली हाँ तोरा शौक बता पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार हम ही बचाइम तोरा हर जगह
करे सप्लाई इलीगल हथियार के, रखी थार के रंगदार के, इहे से लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे एक 47, रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के। कमर में पिस्टल और तू नाली, आरा से बारिश तू यही से भाव खाली। मार देना गोलियां हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के, देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। ठट्ठा मार दीना गोलियां हो हम जान के, तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के, देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के, दारू बंद तबो पी हम हर शाम के। तू का जनबू। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं आशुतोष साहू वापस आ चुका हूँ एक और नए स्ट्रीम के साथ। इसमें हम खेलने वाले हैं हॉगवर्ट्स लेगेसी, जैसे कि हम कंटिन्यू कर रहे थे गेम को। और उससे पहले एक मिनट में गेम चालू कर दूँ। इस गेम का स्क्रीन एक बार आ जाए। ओके, आ गया। आई होप गेम का स्क्रीन आपको विजिबल हो रहा होगा मेरे हिसाब से। हेलो 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 विकू भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। बहुत बहुत स्वागत है स्ट्रीम पे। क्या हाल है? हेलो सुमित भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम। क्या हाल है सुमित भाई, कैसे हैं आप? आई होप मेरा ऑडियो आपको आ रहा होगा। बाकी रहा बात गेम के ऑडियो का, हाँ ओके, गेम का ऑडियो भी आ जाएगा वैसे। हाँ, रहा बात फेस कैम। क्या, चलिए कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा लाइट जो है वो एक साइड पे थोड़ा सा लो रह सकता है ना, काइंडली थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। और कंटिन्यू करते हैं गेम के साथ। हैप्पी दशहरा सबको। सबसे पहले हैप्पी दशहरा सबको, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का स्ट्रीम पे। सभी लोगों को हैप्पी दशहरा। आज दशहरा के पावन अवसर पे आप सभी लोगों के लिए आगे का जीवन, आगे का दिन मंगलमय हो, ये कामना मैं जरूर करूंगा भगवान के पास। और इसी कामना के साथ आगे बढ़ते हुए कंटिन्यू करते गेम। आ रहा है सब। ओके, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मेशन। और जैसा कि हम जो है वो काफी टाइम, आई मीन ऑलमोस्ट 2 से 3 हफ्ते हम जो है वो स्ट्रीम नहीं किए थे। इसका रीजन ये था, आपको तो पता ही है, मेरा कीबोर्ड जो है वो सही नहीं था, साथ ही साथ माउस भी। तो वी आर बैक विथ न्यू कीबोर्ड एंड अ न्यू माउस। एक नया कीबोर्ड और एक नया माउस के साथ आ चुके हैं वापस से हम गेम को और भी बढ़िया तरीके से खेल पाए। चलिए बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं। I've seen this before in Gringotts and the restricted section. ओके सॉरी, हम यहाँ पे थे, यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ पे आगे कुछ बंदे हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि उस वक्त कंटिन्यू किए थे तो बहुत कुछ चीजें जो है हमने कर दिया था। okay, so we have to go to the downwards, जाना है। Impressive. That must have done something. मेरा हेडफोन का ऑडियो काफी ज्यादा है भाई, इनके पर्दे फाड़ देगा ये तो। डिबा अरे तो खुल गया ये भाई।
ये सीढ़ी बढ़िया लगा तो भाई है ये। यप मैं वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल में आया, लैग हो रहा। स्ट्रीम वो रिफ्रेश कर दीजिए, सही हो जाएगा, क्योंकि गेम तो सही चल रहा है। तो मैंने चैट विंडो खोल रखी है चैट देखने के लिए। Revelio. More traces of ancient magic. Something must be different. अरे इधर एक रास्ता है कुछ। ओ भाई ये लोग क्या मारने वाले हैं क्या? नहीं आगे कोई है मारने वाला। Welcome sight. यस लगा ही था। What to expect this time? ये तो और लोग भी आ गए। Levioso. Accio. Expelliarmus. Protego. हिट भाई गड़लत हो गई। Levioso. Expelliarmus. Incendio. एक मिनट Protego. Levioso. Expelliarmus. नाइस। Levioso. Expelliarmus. Protego. Expelliarmus. Levioso. ओके ये भी खत्म, अभी अकेला बचा है। नाइस। Levioso. Expelliarmus. Levioso. Expelliarmus. Levioso. खत्म भाई। बारिश हुआ क्या? अपना कैरेक्टर तो कालू था ना? नहीं मैंने बदल दिया क्योंकि वो सही नहीं लग रहा था, इस वजह से मैंने बदल के जहां से हमने छोड़ा था गेम को फिर वहां तक मैंने वापस से कंटिन्यू कर दिया, और जहां पे हमने स्ट्रीम उस दिन रोका था उसी से हमने कंटिन्यू किया, ताकि आपको फिर वापस से वही कैरेक्टर बदलने के बाद से आपको शुरुआत से ना देखना पड़े चीजों को। कोई चीजें है वो मतलब आगे ही हम बढ़े, हम पीछे ना रुक जाए बस। मुंबई में तो रोज का हो गया बारिश। अरे अरे आज दशहरे के दिन पे बारिश होगा तो मजा नहीं आएगा। These look familiar. ओके ओके अच्छा ओम की मी भाई तो ले कहाँ पे? Accio. नीचे कुछ डिब्बा वगैरह है क्या? नहीं तो क्या करेंगे क्या? चांसेस है आज भी बारिश की। हमारे यहाँ पे अभी के लिए थोड़ा बहुत तो हो ही रहा है कि इधर जाने के लिए बोल रहा है। उस तरफ भी एक रास्ता है, इस तरफ भी रास्ता है। ओके शुरू हो गई बारिश यहाँ पे। ओके उस तरफ जाना है हमें, तो इधर से जा सकते हैं क्या? इधर डिब्बा है सर। हेलो केतन वेलकम टू द स्ट्रीम, क्या हाल है, कैसे हो?
टिप टिप बरसा पानी, आग लगाना है क्या? उस तरफ जाने का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे एक डिब्बा है कुछ। अरे नीचे आ गया मैं। आज ज्यादा वेस्ट इंडीज लग रहे हो। अरे नहीं, लाइटिंग कम है थोड़ा सा, What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things इस from वजह से both ऐसा है। sides of the archway. अरे मुझे उधर जाना था भाई, मैं क्या कर दिया। Accio! वो डिब्बा खुलना था। अब लाइटिंग कैसा है? मेरे का तो एज यूजुअल देख रहे हो। यप यप। अरे डिब्बा फूल है The भाई। room changes when I move in and out of the archway. Accio! हो गया ठीक। दूसरे साइड से डार्क लग रहा था, या वो दूसरे साइड का लाइट थोड़ा है। ये इधर जाना था। अरे अरे, I अच्छा can see ओके। a way out on one side, but when I pass through the archway, it's blocked by a wall. More statues. आई गेस यहाँ पे बंदे आएंगे। लगा ही था। यप 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 यप। Levioso! Expelliarmus! Incendio! Levioso! Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! Expelliarmus! I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? ये चचा में तो उतने में ही खलास हो गया यार। Expelliarmus! Levioso! Incendio! यस क्लास। Not making this easy on me. आगे आशु भाई, क्लीन शेव में कैसे दिखोगे? क्लीन शेव किया था लेकिन ज्यादा सही नहीं लग रहा है इस वजह से। मतलब अभी नहीं, वो पहले मैं क्लीन शेव करता था लेकिन सही नहीं लगा, तो इस वजह से मैंने करना बंद कर दिया। थोड़ा मतलब स्लाइड शेव कट, मतलब थोड़ा सा एक दूसरे से क्यों नहीं लड़ते। पूछना पड़ेगा। अरे रे, सीढ़ी से जाना है, इससे जाना है भाई? इधर भी बंदे हैं। ये मूर्तियां पहले से फोड़ सकते हैं क्या? I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Accio! ओके इधर कुछ है इस में। ओ भाई साहब, वहां पे कैसे जाएं? ओके 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 ओके। इसको उस तरफ लेके जाना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? इधर से खींच सकते हैं क्या इसको? नहीं, इधर खींच तो देंगे लेकिन इसके ऊपर चढ़ेंगे कैसे अभी? यहाँ जंप करके चढ़ सकते हैं। नाइस।
डायरेक्ट जाना पड़ेगा। Seems I ought to explore this archway from both sides. ना कोई उस तरफ से इस तरफ लेके आना पड़ेगा कैसे भी करके। मस्त लगता है ये लिफ्ट, तो मजेदार है। ओ ये लिफ्ट को यहाँ से खींच सकते हैं क्या? Change on both sides of the archway. Something must be different. Accio. कुछ और ही ट्रिक होगा, देखना पड़ेगा। लेट्स तो सीधा करना पड़ेगा सबसे पहले। टेढ़ा हो गया है। कर जा भाई, ये कूदने में I क्यों need डर to रहा see है? how the room changes when I move in and out of the archway. Accio. ये तो इसके ऊपर नहीं जा रहा है। हाँ, इसका कुछ दूसरा अलग ट्रिक होगा मेरे से, ढूंढना पड़ेगा। ओके, वो प्लेट को उधर खींच दिए तो ये रास्ता खा गायब हो गया क्या? अरे भाई गजब का सीन है ये। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ऐसा है। लिफ्ट से ही जाना है। यप यप, क्योंकि यहाँ पे एक था, वो लिफ्ट से ही जाना था, वो भी चला गया कहीं तक। उस तरफ जाएंगे कैसे? अभी इधर तो आ गए। Accio. हाँ, So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. Accio. हाँ, और थोड़ा आगे लाना है इसको, देखते हैं। लेकिन आगे लाएंगे तो वहां पे भी जाना है ना, आगे लेकिन लाएंगे कैसे? यहाँ से खींचना है क्या इसको? So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. ये ऐसे वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? मेरा हेल्थ जा रहा है क्या? अबे अभी ये प्लेट कहाँ पे गायब हो गया? ये है भाई। So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. और तू के कहाँ? वो भी तो, अरे रे यहाँ गया वापस। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे इसको खींचना नहीं था, मैंने गलती कर दी। समझा 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 समझा, लॉजिक अभी समझ में आया है ना। वो इधर चले गए तो यहाँ ब्रिज आ गया। That's it. I need to use both sides of ठीक है? the archway to get the वापस आ platform गए? to the other side of the bridge. ब्रिज चला गया अभी। और वो वहां पे है।
Accio. अरे So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. यहाँ पे छोड़ते हैं इसको। ये ब्रिज का अदर साइड है। ओके ब्रिज आ गया साइड से नहीं है। ब्रिज आ गया। ओके प्लेटफॉर्म ये रहा। Accio. So that's it. I need to use both sides of the archway to get the platform to the other side of the bridge. क्या ही टेक्निकलिटी से है भाई। I'll never get used to these floors. ओके ये साउंड कर रहे हैं कि एक को तो मैंने पहले से फोड़ दी ना, इससे फाइट करना पड़ेगा। इधर एक है, दो है, यहाँ पे कोई नहीं है। Leviosa. Expelliarmus. Expelliarmus. अरे गलत जगह फोड़ दी भाई मैंने। Expelliarmus. Expelliarmus. ये चाचा मर गया था ना, ये वापस कैसे जिंदा हो गया क्या? Expelliarmus. वो लोग खुद को भी डैमेज दे रहे हैं। नाइस, सर ही फोड़ दी भाई। अबे मुझे ही फोड़ दिया इसने तो। मेरा हीलिंग खत्म है। Expelliarmus. Leviosa. Expelliarmus. Leviosa. भाई हीलिंग्स कम है, हीलिंग्स कम है। Leviosa. Expelliarmus. Leviosa. Leviosa. अड्डा। हेलो सदिया जी, वेलकम टू द स्ट्रीम। खत्म। कोई ना हील हो जाएंगे वैसे भी। क्या हाल है सदिया जी, कैसे हैं? कहाँ से आए थे हम? हाँ ऊपर से। कहाँ को जाना है भाई? हाँ सॉरी नीचे। अबे हाँ
Accio. ये नीचे उतरना पड़ेगा। हुई! क्या आगे की तरफ सीढ़ी है कुछ, आई गेस। पिंक कुछ हो गया होगा शायद से। लिंक वगैरह तो आप भेजे नहीं होंगे, कहाँ पे डॉट लिख दिए होंगे तो वो लिंक समझा रहा होगा उसको, तो जैसे वो लिंक बोल रहा है। आगे नहीं जाना है क्या? ये भाई उधर ब्रिज दिखा रहा है, इधर नहीं दिखा रहा है। Revelio. रिवेलियो करने से भी यहाँ पे है सीढ़ी। सीढ़ी दिख रहा है, ऊपर चढ़ेंगे कैसे? अरे चढ़ गया तो फिर सही। टकराया। आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ, अपन भी बहुत ही बढ़िया मजे में बिल्कुल है। क्या चल रहा है अभी? फिर ये मैं इसको पास कैसे चलाऊंगा अभी? चढ़ गए। हाँ, इधर कौन सा रास्ता है भाई? ये वाला है, वो तो वो वाला है। ओके 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 ओके, नाउ आई गॉट इट। देखा कैसा सीन है भाई? पढ़ाई चल रही है, आपकी शादी कहीं लगी है क्या? नहीं, शादी क्यों करना है अभी? नहीं नहीं, अभी कहीं शादी नहीं करना है भाई। क्या बात कर रहे हो? Accio. ये क्या सीन है? इतना लॉजिक है गेम पे। अभी यहाँ पे कोई बंदा है क्या? आई होप सो ना हो। ओके, हीलिंग रखा है, मतलब बंदा है पक्का, कोई ना कोई होगा आगे। दो दो हीलिंग छोड़ के गया हुआ है। ऊपर से कोई आने वाला है क्या? तो सामने से कोई आएगा शायद। सामने से ये कौन आएगा? दिल में बोल रही है, हो रही है हलचल भाई। भाग भाग भाग। Don't हाँ, like the look पता ही of था। this. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. अरे ये छोटे 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 छतरियों को सबसे पहले मारना पड़ेगा।
Levioso! Expelliarmus! चलो एक तो गया। ना 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 ना। कहाँ फेंक रहा है भाई तू? Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! कम भाई। अब ये कौन आया भाई? अरे ये तो बड़ा मोटू है भाई। हेट भाई। अरे ये तो पिलर को भी फोड़ सकता है। Expelliarmus! कम भाई साहब, तो बड़े बड़े पिलर को भी फोड़ सकता है भाई। दिक्कत है, काफी दिक्कत है। तो थोड़ा सा तकनीक इस्तेमाल करके खेलना पड़ेगा। अरे फिर से फाइट लेना पड़ेगा क्या? आ जाओ। Don't नहीं like कर the अभी। look of this. Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! खत्म भाई, मैंने हील नहीं, काफी कम हीलिंग्स था। रोड गेम ही तो किया हुआ है। लगता है ये पोषण मार मार के आगे काम करना पड़ेगा, और कोई चारा नहीं है। Don't like the look of this. Levioso! Protego! Expelliarmus!
Expelliarmus! Levioso! Expelliarmus! अरे शिट भाई, एक ही शॉट में मार दिया इसको। Expelliarmus! अरे क्या मार रहा है भाई ये तो। Expelliarmus! Levioso! शिट भाई, गजब मार रहा है ये तो। कैसे भी करके मारना पड़ेगा अभी फिर। ये बचा सकते हैं, क्यू प्रेस करके हम प्रोटेगो कर सकते हैं ना, मैं ये भूल गया था। कैन सेव आवरसेल्व्स जब वो कर रहा है तो। Don't like the look of this. Expelliarmus! Protect! Protego! Expelliarmus! Protego! ओके, प्रोटेगो भी काम नहीं कर रहा है इसमें। Expelliarmus! अरे मैं कहाँ जाऊँ भाई। Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! Levioso! Incendio! Expelliarmus!
अरे काफी कम हेल्थ है भाई। Expelliarmus. हिट भाई काफी आगे तक चले गए थे। सॉरी 70% तक तो खत्म हो गया था वो। एक मिनट रुकना। एक मिनट गाइस। ঠিক আছে। ହଉ ଭଲ ହେଲା। ସେଟା ତ 5 ଷ୍ଟାର ଆକା ଥିଲା ଆଗରୁ। ହଁ ହଁ ଠିକ ଅଛି ଖାଲି ଚଲେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି ଚଲେଇ ଦିଅ। ହଁ Don't ଠିକ like ଅଛି। the look of this.
हाँ हाँ ठीक अच्छे हम तारी भी हम Expelliarmus! हाँ 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 Expelliarmus! के अंदर घुस के मारना Levioso! Expelliarmus! Levioso! Levioso! बताओ अरे रुको भाई Expelliarmus! कौन दो कौन दो हाँ ଆଉ ଠିକ ଅଛି କାଲି ପାଇଁ ଶିଫ୍ଟ କରିଦଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ ଆପଣ एसएमएस ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ନି କି କାଲି ପାଇଁ ଶିଫ୍ଟ କରାଉଛି शेड्यूल କରାଉଛି ଆପଣ एसएमएस ରେ ସେ ओटीपी ବୋଲି ଖାଲି ओटीपी ରେ ଗୋଟେ कंटेंट ଲେଖି ଆକା ଦବ ସିଏ ଦେଖିଦେ ପଢ ଦେବେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ସେଠୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ରିଶେଡ୍यूल ହେଲା ବୋଲି କିରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ओके ओके ହଉ ସେଟା ବୋଲେ ସେ ଆଜି ନବା ପାଇଁ ଇଏ କଲା ତ ସେଟା ଫେଲ୍ଡ ବୋଲି ଲେଖିଲା ସେ କାଲିକି ଆସିକି ନବ ଆଉ ଯଦି ଓଟିପି ସେ ଏଥିପାଇଁ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ପିକଅପ୍ ନେଇଗଲା ବୋଲିକି ଓଟିପି ରେ ଦେଖାଇଦବ ବୋଧେ କାଲିକି ଆସିକି ନେବି ବୋଲିକି ସି ପ୍ଲାନ୍ ରେ ଥିବ ନହେଲେ ଆଉ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାଲିକି ଆସିକି ସେ ନବ ଆଉ Expelliarmus! हाँ 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 Expelliarmus! Expelliarmus! କୁହନ୍ତୁ 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 Expelliarmus!
ठीक है। हम्म। 5 मिनट रखिए कर दिन ହେଇଯିବ। ନା 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 15 ନାହିଁ 5 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନାଇଁ ହଁ Don't like the look of this. Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Protego! Expelliarmus! ଠିକ ଅଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ବୁଲିଲା କି ନାହିଁ। Expelliarmus! देखिए କରନ୍ତୁ देखिए କରନ୍ତୁ। Levioso! Expelliarmus! Incendio! କୁହନ୍ତୁ କଣ କଲେ ସରି ହଁ ଭିଡିଓରେ ଦେଖେଇଲେ ମତେ ଟିକେ। ये कौन स्विच थी वो बोलते सर। क्या राइट को नेले राइट 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 को नहीं नहीं सीटा बुल्ला जे सी ऊपर रेगुलेटर जाको टिकट देखा राइट राई होची तीन टाका अछि तो किछ नहीं तो स्विच टा ऑफ करले ऑफ करके आउथर ऑन करले बुल्ला तो असले ड्रेन वाटे थिला सेटा पानी ड्रेन करबो से बुलेबो कोडा तांको एबे स्ट्रांग रे दूतबे रेगुलर रे दिबे नहीं। ठीक अछि भलो सीटा का भलो हला वाशिंग मशीन चलची तो पचकानी गुडी वायर फायर की भांगा भांगी स्क्रैच फ्रैच फटा फुटी किछ नहीं तो
उसका नहीं की तोड़ो बटे नहीं सीधा सीधा जना पड़ो जे आपण चारियाडे टिके देखि दियंतु सीधा कोडी स्क्रैच व्राच की भंगा भंगी किसी चीज कोन खाली भलसे देखि दियंतु छाड़ दियंतु होला आउ पाए सी ड्रेन पाइप रे पानी टिके फ्लो करी देख देबे पाइप ठीक अछि तळे आगुरु सोलो थिला तो नहीं नहीं तळे आगुरु सोलो थिला तो सॉरी गाइस sorry guys sorry for the interruption ah कहाँ पे है अरे नहीं नहीं वही पे ही है अरे वो कोई एक बटन प्रेस करने से वो लेके फेंक दिया ओके ओके मुझे लगा ये लेके फेंक सकते हैं करके Incendio. Expelliarmus.
पे हीलिंग नहीं है मेरे पास। Protego! Expelliarmus! गया गया। सेट भाई। मेरे पास और कोई चीज है क्या हाइट लेने के लिए? एक बटन था जिससे हम चेंज एंड में है क्या? तो लेवियोसो वाला है। ये नहीं, हील होने वाला कुछ है क्या? अरे ये अभी से ले लेते हैं, ज्यादा हील होगा। फास्टर। अरे मेरे पास तो गोभी है ना, मैं गोभी फेंक के भी मार सकता हूँ यार, मैं भूल जा रहा हूँ ये चीज। गोभी फेंक के मारेंगे। शील्ड वाला एक है और एक वो वाला एक स्टार टाइप कुछ है। शील्ड वाला। डिफेंस ज्यादा बढ़ गया है इसका, ये ऑफेंस बढ़ाना है। डिफेंस बढ़ेगा, इसमें डिफेंस और बढ़ जाएगा है। बढ़ेगा। इसका डिफेंस ही ज्यादा है फिर टोपी का, तो इससे डिफेंस और बढ़ जाएगा। तो ऑफेंस का है, कह सकते हैं एक बार।
ट्रस्ट का छोड़ दे। क्या आई? Don't like the look of this. Expelliarmus! Protego! Stupefy! Stupefy! अरे ये तो जल्दी खत्म हो गया काफी। Protego! Expelliarmus! Levioso! Levioso! ये जल्दी खत्म हो गया वैसे ये वाला। थोड़ा इक्विपमेंट वगैरह चेंज करने से हेल्थ भी नहीं घटा मेरा। Incendio! Expelliarmus! Incendio! Expelliarmus! Protego! Expelliarmus! 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 Incendio! Expelliarmus! फाइनली What a relief. चाचा मर गया या चाचा सर दब गए? अरे मैंने वो केवेज डालना भूल गया मैं। फिर नीचे ये किसका हाथ है भाई? Another pensive. Ear slots. Ear slots are full.
तो ऐसा कुछ गियर लिया ही नहीं। आंख से पानी निकल रहा है क्या? क्या खुलेगा? इसने अपने झड़ी में उठा ली। कटसीन। Your ability to transfigure the world around you is remarkable. Nice. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark माइक Arts, और Professor. गेम Sit, Isadora. चालू है। Tell us about your travels. गेम मोड भी चालू। I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map. अरे सही है। मैप चैम्बर पे आ गया हूँ। वो वाला जगह, यस, ये वाला जगह। तो यहाँ पे बैठ के फर्श साफ कर रहा है। मोटा भाई। What have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. You look familiar, sir. I imagine you saw me in the first pensive you accessed, in Gringotts. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You Correct, must take mission care to के keep बाद them एक-एक safe. ऐसे बुड्ढे You'll need them to करेंगे complete शायद the से। journey we have अब set एक-एक forth मैप for में। you. इन Once you have them all, ये we'll tell you what to do with them. वॉलपेपर में। Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind.
They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of एक फोटो से दूसरी Sambakar's फोटो tower, बात कर रहे हैं. they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. अभी We के shall ट्रायल्स होल्ड defer किया to गया. you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the pensive. Before the witch from the last pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of Okay. course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go, Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. देखते हैं वो क्या चीज़ है. और कट सीन. रेडी हैं. फर्स्ट आ गया. है भाई नया क्वेस्ट का. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. हिरोना कहाँ पे मिलेगा अभी. तेरे पे जाना पड़ेगा. इसके लिए डिपल्स और लर्न करना पड़ेगा. ऊपर जाना. Off on another adventure, are we? When will the first years understand? No password, no entrance.
क्या स्क्रीन थोड़ा बहुत लैग हो सकता है, ग्राफिक्स लोड हो रहा है ना। People who boast. There's something in there. I just. भाई ये तो जाना था, इतना घुमाया क्यों फिर। अरे एक मिनट रुको तो, मैप जगह कहाँ पे है, इतना भाग के जाए। अब निकालो भाई। अरे फिर जाना है, कहाँ पे है भाई, यहाँ पे है। डायरेक्ट मैं चले जाते हैं, उसके बाद से भाग लेंगे। How nice to see you, my young friend. This place has seen better days. सर शार्प के पास जाना है वैसे, क्या है चाचा, कहाँ पे है। Revelio. Hogsmeade, here I come. Not much of a dark art. I wonder where they go. अरे सर शार्प के पास जाना है, डिपो क्या ये काम। यही है, हाँ यहाँ पे तो हूँ मैं, ताला क्यों लगा हुआ है। I'll say it again. Can't thank you enough for helping to save the village from those trolls.
ओके, असाइनमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा उससे पहले। हम कहाँ से खरीदेंगे अभी? I wish I had the courage to go into the forest. Pardon me, but were you saying something? Oh, hello. Talking to myself. I'm Clementine Willardsey. Charmed. I was musing on the precious butterflies I see near the edge of the forest. Whenever I come near, they fly off into it. When I was at Hogwarts, we truly were forbidden from entering the forest. Told horrible stories about it, and I've had an irrationally intense fear of it ever since. You want me to follow the butterflies? Very well. If I have time, I shall see where they lead. You can usually find me right around here. I hope to see you soon. Don't forget, the butterflies अरे ये वाला क्वेस्ट नहीं करना है भाई मुझे, अभी असाइनमेंट कंप्लीट करना है। on the fringes of the Forbidden Forest. Good luck. प्रोफेसर शार्प कहाँ पे मिलेंगे? That was an interesting class. I hope Sharp wasn't too disagreeable when you handed... Professor Sharp was annoyed, but we sorted it out. No harm. Cheers to that. He probably... Sharp may seem gruff, but I'd bet a few galleons he blew up a potion. Best be off. Next time we talk, I promise. Fewer explode. ये पिपिंग्स पोशंस, हाँ एड्यूरस, एड्यूरस तो नहीं है हमारे पास। मैक्सिमा खरीदना है, फोकस खरीदना है। अभी ये जे पिपिंग्स कहाँ पर है वो ढूंढना पड़ेगा। व्हाट्सएप
राइट। ये विभिन्न स्पोर्ट मिल गया। एक मिनट में थोड़ा पानी भी क्या है, देखिए आ रहा है। Sometimes it seems all right. Pulso, the banishing charm. Useful for pushing objects or adversaries away. Complete the required tasks and meet me in my classroom. I've not forgotten about our library venture. How did you fare? If you're keen for some illicit spell practice, meet me outside the Defense Against the Dark Arts classroom. I know a discreet place near there. Please meet me in the 7th floor corridor as soon as you can. I have an idea for somewhere you can focus on your studies, away from prying eyes and distractions. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects for a short time. Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. It's time you learned, Iglesias, the freezing spell. It is an efficient way to cool down a heated situation. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you've done that, come and see me. I hope you will come and see me about a pressing and highly confidential matter at your earliest convenience. I believe that we may be able to help each other. Please see me after class once you have completed the tasks I've set for you. I would like to teach you Descendo, useful for pulling objects to the ground.
on in. Healing potions are a speciality here, should you need any. What can I do for you today? मैं 2 पोशंस खरीदने में से कुछ आइटम भी बेचने हैं। क्या क्या आइटम बेच? I hope to see you again. फिर में तो एक ही वाला बेच सकते हैं। ब्लैक लेदर ग्लोव्स एक बेच देंगे। गोल्ड रिम्ड सर्व कर सकते कल एक बेच। हेडवेयर में ये सारे के सारे डिफेंस को घटा रहे हैं, यही डिफेंस को बढ़ा रहा है। तो ये टोपी छोड़ के बाकी को वाला ऑफेंस घटा रहा है, ये वाला ऑफेंस भी घटा रहा है, ये वाला इसी एक का वैल्यू मिलेगा। आउटफिट में जो वो स्वेटर को बेच देंगे। ऑफेंस अप्लाई नहीं हो रहा, डिफेंस तो 6 घट रहा है ऊपर। तो ज्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो सब बेची What can I do for you today? चल रिम टैकल I hope to see you again. ट्रैकिंग पर कोई क्लॉक रखना है। गोल्ड ट्रिम डेबोनायर Well, for now. What can I do for you today? का शेयर वैल्यू 60 रुपए मिलेंगे। मैं कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. भी बेच दो, भी बेच दो। ₹1 भी नहीं मिले। I hope to see you again. नहीं जा रहे हैं भाई, तेरे पास खरीदना है सामान तो क्या चाहिए। चलो एक ही आउटफिट चाहिए। हाँ ठीक है। For now. क्या क्या लेना था? फोकस पोशन, मैक्सिमा पोशन। What can I do for you today? A wise decision. Thank you. हो जाएगा सर।
800 में कुछ सेलिंग लाइक चीज। I hope to see you again. Farewell for now. उस पोर्शन नहीं है, उसका कैसे करना लगा। तो होता क्या है? Expelliarmus. Incendio. तो डर के भाग गए भाई। You shall hold that wand still. Same after he was attacked by a well. Excellent. Find myself scurrying home at night these days. मैं जानना है बट मैप है। नहीं तो आना था सच। आना Potions when Professor Sharp is so अरे ये क्या धुआं उड़ा रहे हैं ये लोग। How are your assignments coming along? I completed your assignments, Professor. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Yes. Concentrate. Do not let your mind wander. मैं गलती से उल्टा रोटेट कर दिया था, फंस जाता मैं। You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should, perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a... तो ये डिपुल्सो है। Enchanted books here. Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spellcasting. Yes. जब ये बाकी जो भी ताला लगा है उसका भी खोल के चले जाते हैं। हाँ लेवल तेरा नहीं हुआ है भाई अभी। अरे जगह पे आना तो क्या चले जाते हैं करेक्ट। Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. Hog's Head, okay. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Have you heard what Ranrock and Rookwood are working on together? Not much more than the fact that they seem to have some sort of uneasy alliance. Friendship between wizards and goblins is rare enough, but between those two, they each want something the other has. I can guarantee it. Okay. That said, I fear they're like a two-headed serpent. Both will need to be taken down to stop whatever scheme they've been plotting. You seemed unfazed by Rookwood and Harlow the other day. They don't scare you. They're bullies. Plain and simple. Never tolerated them in my own life, and certainly won't tolerate them going after my friends. Don't misunderstand me. They're dangerous wizards and shouldn't be trifled with. They should, however, be confronted and reminded, whenever possible, that the rest of us have each other's backs. Okay. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Not saying I don't catch the odd cleaning. An honest day's work. Hello. Good to see you outside the castle. You too, Amit. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. If I retrieve the relic, how do I know you'll tell me the truth about what Ranrock says? We will have to trust each other.
I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. अरे वो पहले ही पहुंच गए वहां पे। I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. ये किधर टेढ़ा मेढ़ा क्यों भाग रहा है भाई? Ah, and there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? What are you up to now? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? What about this helmet makes it so special? The Helmet of Urtgott is an ancient and storied relic, forged during a time of unity among the goblin clans. It inspired greatness, that is, until it was no longer ours. Then it became something else. A symbol of what has been lost, of all that wizard kind has taken from us. Reclaiming it would mean a great deal to goblin kind, and to Ranrock. He would be grateful to me should I return it. It seems Ranrock and Rookwood are conspiring. Why would that be? I had heard this. When the dark-hearted conspire, they seldom make their full intentions clear to one another. I can only speculate, but I imagine their alliance is uneasy and quite fragile. Let us hope that ours is less so. Don't suppose you have any idea what could be waiting for me inside the tomb? Considering a dark witch was involved, I suppose there's a chance you may encounter the Dark Protectors, known as Inferi. The foul creatures thrive on darkness and the cold. Vanquish them with light, force, and, most effectively, fire. It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance CDO वाला proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. यहाँ पे है और यहाँ पे एंट्री थोड़ा आगे ले आया वो। It's sealed. Moths. Curious. Accio.
tasks I've given you, and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's typically used to cut an object, but can be a powerful weapon when needed. तो इसको यहाँ पे लेके जाएंगे कैसे? Confringo. Leviosa. Revelio. तो बस उड़ रहा है। ये दरवाजा खुलेगा वैसे। Revelio. मोस लगाना है क्या? क्या? हीलिंग स्पेल आएगा क्या? Lumos. Merlin's beard. Incendio. अरे मैं आग क्यों लगा रहा हूँ भाई? Lumos. एक मिला यहाँ पे रोब्स। ओह तो ऑफेंस और बढ़ जाएगा। क्लिक करो भाई। क्या है? इससे डिफेंस घट रहा है। This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Incendio. अरे नहीं। Lumos. और तितली चाहिए।
है क्या? Confringo. Capulso. वाह, हेल्थ पोशन मिल गया. Lumos. सब तगड़ा झगड़ा है. I have a feeling I'm not alone here. लगा ही था. He must be struck with fire spells. Make them horror attacks. Visit the collection menu. Learn about. Confringo. Incendio. क्या रे? अरे रे भाई, ये कैसे हो गया? I have a feeling I'm not alone here. They're certainly persistent. Expelliarmus. Protego. Stupefy. Protego. cosa no? Correre? Ah, no, ଘରେ ଅଛି. Oh. Zero. केस नाही रे बाबा रे. ବିଜୟ ଦାଦା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛନ୍ତି କି? କୋଉଠି ଅଛି ଏବେ? ବିଜୟ ଦାଦା ଦୋକାନରେ ମିଳିଯିବ ତାର ତାଙ୍କେ ଯଦି ସାଧା ହେଲାଣି ତ. ହଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ଫୋନ ପେ କରିଦିଅ 150 ଟଙ୍କା ପଠେଇଦେଲି ବୋଲି କହିଦେ. ଆରେ କେସ୍ ମାଗିଦେ. ମାନେ କଣ ବାଇକରେ ଯିବା ନା କେମିତି? ଚାଲି ଚାଲିକି ତ ସେମିତି ହେଲେ ଠିକ ଅଛି. ହେଲେ ନାଇଁ ବୋଲେ ଚାଲେ ବା ଆମେ ମିଶା ଭାରବେ ତ ଆମେ ଆମର 3 ଜଣ ବୁଲେଇବା ଆମେ ତାଙ୍କର ବୁଲେଇବା. ଠିକ ଅଛି. ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଟା ଠିକ ଠିକ. ହଁ ହଁ ସେଟା ମୁଁ କହୁଛି. ମୁଁ ସେଟା କହୁଛି. ହଁ ସେଟା ତ ସତ କଥା ରେ. ହଉ 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 ଠିକ ଅଛି. ହଉ
Okay, let's continue. सर उठा के क्या करेंगे हम? सारा हैं तो उठा लेते हैं। Lumos. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. ऊपर की तरफ कुछ एक है शायद। Lumos. तेरा तितली आके कहाँ पे देना? अरे मैं नीचे उतर गया भाई। Lumos. क्या पावरफुल तितली है सच से? यहाँ एक तितली वहाँ लगा हुआ है। What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Deposit. जो घुस के जाना पड़ेगा क्या? फिर भी देख रास्ता है। जगह के लिए है। चेस्ट के लिए। डार्क डिजर्ट्स का बेस्ट नहीं। तो ऑफेंस और बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना बढ़िया। Oh!
ये ऊपर आने का रास्ता है ये। हाँ, की तरफ का रास्ता ऊपर आने के लिए। वो संध्या, वो संध्या। अरे शिट, तो हो जाएगा करके आराम से कर। Sì, no che le Chris vi ricordo è online altre. ये भी लेट ही नहीं।
Lumos. देखो चिंता करी कुहतु जस बोली यस पर तो अभी भी ऑफर अच्छी जाइने ओ ये लगा हुआ है क्या हाँ चलाए थे इसको लीवर कौन सा वाला उठाएगा ये वो वाला लीवर उठा रहा है ओके इधर लगाना है This looks तितलियां even more complex. Depulso. Lumos. कैसे उधर तो नहीं जा सकते मारना पड़ेगा Lumos. एक और एक इधर रखना पड़ेगा तीसरे वाला कैसे लाएं Depulso. Lumos. दो तो आ गए तीसरा अगर वहां से ले आए तो वो सीडी इधर नहीं आएगा करके देखते हैं Depulso. Lumos. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Depulso. Lumos. चल 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 भाई Depulso. Lumos. नहीं ऐसा तो नहीं होगा फिर Depulso. I need to bring moths to the door. वो तो इधर ले आए तीसरे ऊपर तो ले लेगा लेकिन एक में ये घूमेगा क्या Lumos. नहीं देखो ये डीएक्टिवेट हो जा रहा Protego. Depulso. हाँ और एक जरूरत
Lumos. Capulso. अरे ये इधर ही है कि ढूंढना पड़ा मुझे। The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead Ashwinder. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. क्या मैंने हेलमेट उठाया कि नहीं? मैं निकल जा रहा हूँ बाहर। क्या होगा सच? Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Lodgok, what should we do about the helmet thieves? I'm afraid there's no choice but to stop them. Get to that helmet before... हाँ, ये रहा था। ये 25,000 रहा है वो। फिर हो जाएगा। सेंसर बढ़ जाएगा तो हाइट भी ले सकते हैं। सोलर प्रोटेक्शन गूगल्स। तो और बढ़ा देगा डिफेंस को फिर। Incendio. Confringo. Expelliarmus. अरे मर गया ये भाई 2 शॉट में खत्म। तो इसको मारना मुश्किल है। These rocks have seen better days. Let's get this over with, shall we? I have things to do. फिर भी कुछ है। There they are. The Ashwinders. एशवेंडर्स अगर है
इनविजिबल वाला था। You will not survive this fight! You will pay for that! Expulso! No! Let them fight. Incendio! Expulso! हम इस चीज का फायदा उठाते हैं, फिर हम मारेंगे। Expulso! 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 What have you done? अब हमारी बारी। ढूंढ रहा है वो कहाँ पे है करके। मैं हूँ इनविजिबल। इधर छिपने के लिए जगह भी बनाया हुआ है। करके क्या करना है? तेरे कुछ है और क्या चीज है? जगह तो घूम आया पूरा। फिर लकड़ी गिरा यहाँ पे। Revelio.
करना क्या है? ये पत्थर फेंक के करना क्या है? नहीं तो कहाँ में सर? ओके, यहाँ पे और जगह है। नहीं, ये नहीं गया। That's it. This is for Rookwood. No more happy days for you. Come back here. Think you can sneak away from under my own eye? Where did you go, coward? You won't escape again, cow. Serve your mistress. Oh. क्या एस्केप है भाई? ये तगड़ा एस्केप है। वो लोग वहां में मुझे ढूंढ रहे हैं, मैं यहाँ पे इधर वापस। चलो ढूंढने दो। क्योंकि के हैं वो लोग। Oh, I shall enjoy this. कि The castle must have been quite stately in its time. The more graves I fill, the more galleons I get. Won't hear me complaining. There's no telling what lies in wait for me in there. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned.
ये वाला ज्यादा जगह ज्यादा से तो जल्दी है, पास है, फिर चले जाते हेड वहीं पे। फिट कर जाएंगे, अक्सर ही चल रहे हैं बैठे बैठे, आएंगे शुरू करना था। Welcome, everyone. I see you've Guys, already थोड़ा सा met FPS some drop of the हो सकता है many में भी। beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please एक मिनट assist guys। our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. चलिए That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. Oh. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy.
Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was on... Instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the measles just as you did with Gerald. The measles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Psst, psst, over here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. देखते हैं इसके बाद तो अभी जाना है थोड़ा तुम खत्म कर देते हैं Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back.
Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. बहुत बढ़िया लग रहा है. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her. It's a dreadful busybody. Nice, ये बढ़िया है. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seems to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. गाइस, तो आज एंड अभी के लिए बस इतना ही. मिलेंगे दूसरे एक्सट्रीम, अगर पॉसिबल हुआ तो आज ही मिलेंगे वापस रात को में भी. नहीं तो फिर वापस से कल कंटिन्यू करते हैं. ठीक है गाइस, आज एंड अभी के लिए बस इतना ही. मिलेंगे तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड पीस आउट. हैप्पी दशहरा वंस अगेन. बाय गाइस. रखी थार के रंगदार के, यही से लोग कहे शेर ह बिहार के. कमर में पिस्टल, मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे AK-47. रखी थार के रंगदार के, तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के. कमर में पिस्टल, मुंह पे गाली, गाड़ी के पीछे रहे AK-47. रखी थार के थानेदार के, करीले धंधा बालू के व्यापार के. कमर में पिस्टल और दुनाली, आला से बारी ते यही से भाव खाली. हाँ तोरा शौक बता, पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार. हम ही बचाइम तोरा हर जगह.
करे सप्लाई इलीगल हथियार के रखी थार के रंगदार के इहे से लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल और तू नाली आरा से बारिश तू यही से भाव खाली मार देना गोलिया हो हम जान के तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के दारू बंद तबो पी हम हर शाम के ठट्ठा मार दीना गोलिया हो हम जान के तूती बोलेला हो आरा में हमार नाम के देखी रुतबा तू जान गइलू मोर शान के दारू बंद तबो पी हम हर शाम के तू का जानबू कारोबार के जाली नंबर पर लेट लागल कार के सब यार के और प्यार के अब भेंट होई तो से एतवार के हाँ तोरा शौक बका पूछ ली है नाम जाके मोर थानेदार कही थानेदार केस नहीं लिखूंगा करी सप्लाई इनलीगल हथियार के रखी थार के रंगदार के यही से कहे लोग शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल मुंह पे गाली गाड़ी के पीछे रहे 147 रखी थार के रंगदार के तबे न लोग कहे शेर ह बिहार के कमर में पिस्टल और दुनाली आरा से बाड़ी तू यही से भाव खाली